हेलो चैम्प, वेलकम टू डॉक्टर सौरव सर क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 का सॉल्यूशन। अगर आपको हमारे तरफ से कोई फ्री और पेड क्लासेस की ज़रूरत है और डाउट क्लियरिंग सेशन की ज़रूरत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, इसमें किसी भी कोई भी चीज़ का अगर कोई भी ज़रूरत है, आप डायरेक्ट कॉल और व्हाट्सअप कर लीजिए इस वाले नंबर पे। सर आपका व्हाट्सएप का इंडिविजुअल इंक्वायरी का रिप्लाई खुद ही भेज देंगे। आप लोगों को तो पता ही है, सौरव सर क्लासेस ही एनी टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और दूसरा कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया में। अब यहाँ पे हम लोग इस कोर्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस टाइम द बेस्ट टाइम टू टेक एडमिशन इन डॉक्टर सौरव सर क्लासेस and boost up your preparation with Dr. Sourav Sir. So let's start with question number 51. क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला गया है, कुछ डेटा दिया गया है ऊपर में, देख लीजिए। U3 का वैल्यू है, U4 का वैल्यू है, U5, U6, U7, U8 एंड U9. What is the value of U2 according to the Newton-Gregory forward difference interpolation formula? So U2 का रिजल्ट क्या आएगा इस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला के अप्लाई करने के बाद। ओके, हाउ कैन आई सॉल्व? सो हियर स्टेप साइज let's take step size h equals to 1. okay, step size h equals to 1 and यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ डेल यू, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस फॉर डेल यू, what will be the value? Del u3, that means u4 minus u3, so the result 8.4 minus 4.8, the result would be 3.6. Del u4, that means u5 minus u4, where u5 means 14.5 minus 8.4, so the result is 6.1. And what will be the result of, so ये स्टेप जंप करके लिखा है, ठीक है। what will be the result of u5? del u5 means u6 minus u5, that means what is the u6 value is 23.6 minus 14.5, that means 9.1. what is the value of del u6? the result is u7 minus u6, so what will be the result here? 36.2 minus 23.6, that means the result is 12.6. okay, so what will be the value of del u7? that means u8 minus u7, so the value is 52.8 minus 36.2, so the value is 16.6. what will be the value of del u8? the value is u9 minus u8, so the value is 73.9 minus 58.8, so the value is 21.1. okay, the second forward differences over u, second forward difference, that means del to u, so the value is del 2 of u3 equals to del u4 minus del u3. so what will be the result? 6.1 minus 3.6, that means the result is 2.5. del u
4, that means del u5 minus del u4. So what will be the result here? 9.1 minus 6.1, so the result is 3. Del 2u5, so what will be the result here? Del u6 minus del u5, so the result is 12.6 minus 9.1, the result is 3.5. What will be the result of del 2u or del 2u6 del u7 minus del u6? So what will be the result? 16.6 minus 12.6, so the result is 4. So del 2u7, so del u8 minus del u7, 21.1 minus 16.6, the result is 4.5. Okay, and now the third forward difference, that means del over 3 of u, the third forward differences of del over 3 over u. So del 3 over u3, that means del u4 minus del u3, that means the result is 6.1 minus 3.6, so the result is 2.5. okay, what is the result of del 3u4? That means del 2 del 2u4 del 2u3, so del 2u5 minus del 2u4, so del 2u5 minus 3.5 minus 3.0, so the result is 0.5. del 3u5, that means del 2u6 minus del 2u5, that means 4.5 is 4 minus 3.5, that means 0.5. And del 3u6, that means del 2u7 minus del 2u6, so the result is 4.5 minus 4.0, the result is 4.5. okay, so what are the fourth forward differences? What are the fourth forward differences? Means del 2 u4, del 4u, del 4u, so del 4u means del to the power 4u3 means del cube del 3u4 minus del 3u3. So what will be the result? Del 3u4 means 0.5 and del 3u3 also 0.5. So sorry,
del 3u3 6.1 not here 3.1 sorry 3.0 minus 2.5. So the result is so the result is 0.5. So del 3u4 means 0.5 minus 0.5, that means 0. Del 4u4 means del 3u5 minus del 3u6. Sorry, del 3u4 minus del 3u5 minus del 3u4. Del 3u5 minus del 3u4. That is also 0.5 minus 0.5 equals to 0. And del to the 4u5 means del 3 over u6 minus del 3 over u5. So result is 0.5 minus 0.5, so the result is 0. Okay, so interpolation using Newton-Gregory forward formula. Interpolation using Newton-Gregory forward formula. So what will be the result? u2 means u3 plus del u3 into minus 1 plus del 2 u3 by 2 factorial into minus 1 into minus 2 plus del 3u3 over 3 factorial, that means minus 1 into minus 2 into minus 3 divided by into minus 1 minus 2 and minus 3. So how can I solve it? So u2 4.8 plus 3.6 minus 1 plus 2.5 by 2 into 2 plus 0.5 by 6 into minus 6. So what will be the result? 4.8 minus 3.6 plus 2.5 minus 0.5. Okay, so what will be the, after solving this, the result is 3.2. okay, so the correct answer is, यहाँ पर correct answer कौन सा हो जाएगा? Option B 3.2 is the correct answer here. ऐसे ही बहुत सारा ट्रिक्स को आप जानने के लिए जुड़े रहे सौरव सर क्लासेस के साथ. आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.